धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव। एक सेकंड बैठे रमेश जी he has made a personal observation. I will 1 second. He has made a personal allegation against you. I have already ruled that will not be on the record. A matter which is not on record, why should you counter? And also he has also withdrawn it. Please, no need of a personal explanation because that is unfair. The chair has already ruled and he has also withdrawn. So there is no need of any explanation. A matter which is not on record. Yes, Dharmendra Yadav ji. अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, आज सदन में अचानक ही आया आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026। यद्यपि बेहतर होता पहले से नोटिफाइड होता तो और व्यापक चिंतन करने का भी समय होता, मौका होता, लेकिन ये जिस रूप में भी बिल आया, मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं। सभापति जी, समर्थन तो करता हूं, लेकिन समर्थन के साथ साथ कुछ सवाल हैं। हमारी पार्टी का सवाल है आंध्रा के साथियों से, विशेषकर टीडीपी और एनडीए के लोग जो सत्ता चला रहे हैं या जिन्होंने विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया है। बहुत स्वाभाविक तौर पर आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम स्वाभाविक राजधानी के तौर पर डेवलप हो रहा था, और अगर उस स्वाभाविक राजधानी को आपने स्वीकार किया होता तो आज जो बहुत सारी चर्चा चल रही कि इतनी जमीन की जरूरत पड़ रही है, इतने खर्चे की जरूरत पड़ रही है, इतने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, अगर आंध्रा के साथियों ने, वहां की सरकार ने ये फैसला लिया होता तो आज ना तो इतनी किसानों की जमीन की जरूरत पड़ती, न इतना पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती जो कर्ज लेके आपको लेना पड़ रहा है, शायद नहीं पड़ती अगर आप लोग विशाखापट्टनम डेवलप करते। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं देश का हर राज्य विकसित हो, और स्वाभाविक है राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए बिना स्थायी राजधानी के कोई व्यवस्था चल नहीं सकती। इसलिए देर से ही सही एक स्थायी राजधानी की जो पहल की है उसका हम अपनी पार्टी की ओर से पूरा का पूरा समर्थन करते हैं। सभापति जी, जहां हम समर्थन करते हैं वहीं सवाल बहुत गंभीर हैं। जैसा कि टीडीपी के साथियों ने भी कहा, बीजेपी की तरफ से भी सीएम रमेश जी ने कहा कि इतने किसानों ने अपनी जमीन दे दी, किसानों ने जमीन दी, ये किसानों का बड़प्पन है। लेकिन जमीन लेने से पहले सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल अधिनियम पास हुआ इसी सदन से, क्या 4 गुना मुआवजा आपने किसानों को दिया है? क्या उसके साथ मुआवजा दिया? एक अगर दिया अच्छी बात है, हम आंध्रा के किसानों के हितों की बात कर रहे हैं। मुआवजा किसानों को पूरा मिले, उसके साथ साथ जो रहने की जो कंडीशन है प्लॉट मिलने की वो पूरा मिले। ये हमारी लैंड पुलिंग तो बड़े लोग करते हैं, किसानों को क्या मिल जाएगा हम भी जानते हैं। बड़े बड़े लोग लैंड पुलिंग करके सरकार को देते हैं, किसानों को मिलना चाहिए, ये मेरी पार्टी की तरफ से मांग है। अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं दे रहे हैं तो इस पर आप विचार कर लेना। दूसरा सभापति जी, सीएम रमेश जी ने कहा कि उनके अपने क्षेत्र में 5 लाख करोड़ के एमओयू और इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सीएम रमेश जी ने कहा उनके अपने क्षेत्र में, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कहीं यूपी जैसा ना आए। सही बात है। यूपी में क्या हुआ सभापति जी, 15,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, और 15 लाख करोड़ के, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं 1500 करोड़ भी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। अभी माननीय सभापति जी इसी महीने, मार्च के महीने में जो कंपनी 2025 में बनी, जिस कंपनी की नेटवर्थ केवल 50 लाख है, उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 करोड़ का एमओयू यूपी की सरकार ने साइन किया है। ये इन्वेस्टमेंट कहीं यूपी जैसा ना है, ये आंध्रा के लोगों आप लोग ख्याल रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जानकारी है, आप अपने जवाब में दे देना, जानकारी है मुझे पूरी। इसलिए आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, जहां 54,000 करोड़ एकड़ लैंड आप
लैंड परचेज कर रहे हैं। दूसरी बात, जिसके नाम पे पूरे देश का चुनाव लड़ा गया, महीनों पहले महीनों बाद तक 24 घंटे लाइव चलाया गया है। राम मंदिर के निर्माण को अयोध्या में आरडी अवधेश जी बैठे हैं। अयोध्या के किसानों तक को उनको जायज मुआवजा नहीं दिया गया है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हो रहा है, बैठे टीडीपी के साथी, पुराने गठबंधन के साथी रहे ये, जो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं भाजपा की संगत में जाके आंध्रा के किसानों के साथ ये आप न करना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। इसलिए सभापति जी, जहां ये इन्वेस्टमेंट का सवाल है, और हां, आंध्रा के साथी पप्पू जी ने कहा, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ है, सावधान रहना। उधर जो कोई भी गया है, साइकिल वालों इधर आ जाओ। उधर जो कोई भी गया उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे हैं हमारे शिंदे साहब भी बैठे हैं, नीतीश जी की भी पार्टी के लोग बैठे हैं। आंध्रा के लोगों, आप लोग अलर्ट रहना, ये हमारी आपसे मांग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी साहब से 2 मिनट बात करूंगा, ज्यादा नहीं। विशेष दर्जा राज्य तमिलनाडु, आंध्रा का जो विशेष राज्य का दर्जा है, मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, श्रद्धेय नेताजी ने छोटे राज्यों की स्थापना का हमेशा विरोध किया है, और सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने कहा है कि जब राज्य छोटे हो जाते हैं तो कटोरा लेके केंद्र के सामने उन्हें खड़ा होना पड़ता है, कभी वो अपनी दम पर राज्य का विकास नहीं कर पाते। जैसा आंध्रा के लोग चर्चा कर रहे हैं, राजधानी गठित करने के लिए कटोरा लेके केंद्र सरकार के सामने खड़े। उत्तराखंड के लोगों का विकास कैसे हो पाया वो हम जानते हैं। शुरुआत में केंद्र सरकार राज्य गठन के साथ तमाम तरीके की रियायतें दे देते हैं, टैक्स फ्री, इस तरह का औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, और 10 साल से ज्यादा किसी राज्य को सुविधाएं केंद्र देता नहीं है, और अंततोगत्वा उस राज्य के विकास पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए सभापति जी, मैं श्रद्धेय नेताजी की जो सोच रही है, उस सोच का मैं समर्थन करते हुए मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं, ये छोटे राज्यों की चर्चा, छोटे राज्यों की सोच, छोटे राज्यों की मांग से दूर रहें। जितना राज्य बड़ा होगा, जितना संसाधन होंगे, जितना उनके पास मैन पावर से लेके तमाम चीजें होंगी, उतना ही राज्य आत्मनिर्भर होगा, केंद्र पर उसकी निर्भरता कम से कम होगी। इसलिए आज चूंकि आंध्रा के लोगों की मांग है, और ये हमारे पुराने सहयोगी रहे, और हमें उम्मीद है इसी 18वीं लोकसभा में फिर से एक बार हमारे सहयोगी बनेंगे, और इसलिए इनको जो विशेष राज्य की मांग है, उस विशेष राज्य की जो मांग है उसका हम समर्थन करते हैं, और केंद्र के मंत्रियों से कहेंगे, केवल बैसाखी लेके विशेष राज्य की भाषण न दो। बिहार के लोगों के साथ भी यही किया आपने, आज तक विशेष राज्य नहीं बना पप्पू भाई आपका बिहार, लेकिन नीतीश जी को झांसे में लेके विशेष राज्य का दर्जा देके जो बिहार के साथ किया, आंध्रा के साथ भी अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। इसलिए इस भाषण के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से देश के सभी दलों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में ना आइए, और जो किसानों की जो जमीनें गई हैं उनका भरपूर मुआवजा दीजिए। जहां अगर राज्य और राजधानी का कहीं आप लाभ की बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, तो उस लाभ का अगर कोई सबसे पहला हकदार है, किसी का हक है, तो वो किसानों का है, आंध्रा के। इसलिए आंध्रा के किसानों को भरपूर सुविधाएं दो, ये हमारी आपसे अपील है। एक बार फिर अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से इस बिल का आंध्रा की जनता के हित में, आंध्रा के लोगों की तरक्की के लिए मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री आर रघुराम रेड्डी जी। Thank you, Chairman, sir. We have no problem with the reorganization bill, sir. The Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 included several assurances and commitments for Telangana to address development, institutional and resource concerns post bifurcation, sir. Key promises were as follows: institutional and educational support, NIT, IIM, IISER, and a central university in Telangana, sir. Development of existing institutions to national standards, sir. Support for an industrial corridor. Development of Hyderabad as an IT hub, sir. It's already a very huge
IT infrastructure area, sir. Assistance for backward regional development, particularly in districts like Adilabad, Mahabubnagar and Khammam, sir. Bayaram steel plant was promised to be restored, sir, under section 93, sir. Irrigation and water resources, sir. Constitution of Krishna and Godavari river management boards in both states, sir. Majority of Krishna and Godavari flow through Telangana, sir. National status for Palmur Rangareddy, sir. In the power sector, sir, continuation of power purchase agreement, sir. And also, sir, financial assistance for backward districts under section 94(2), sir, has not been fulfilled, sir. Revenue and financial support, sir. Support for urban and rural infrastructure. We are a landlocked state, sir. We have no problem with our brothers and sisters in Andhra Pradesh getting additional funds in the budget, sir. But in the same line, Telangana also will request additional funds, sir, for regional ring road. At least 3 airports, sir. The Honorable Minister is here, sir. He has been good enough to give an airport in Warangal, sir. We request for another 2 airports, sir. One in Kottagudem, sir, and one in Adilabad, sir. Peddapalli, sir. Moosi River project, sir. Regional ring road and KTPS, sir, which is a very large thermal power station now, sir, needs another 825 megawatts, sir. This needs to be restored, sir, to its original glory, sir. Sir, in the second amendment, 4 Gram Panchayats went into Andhra Pradesh, sir. They are neither here nor there, sir. This is in Bhadrachalam assembly segment, sir. I would request them to consider that these 4 Gram Panchayats be restored back to Telangana, sir. These assurances remain central to the ongoing policy and parliamentary discussions regarding their implementations, status and adequacy, sir. I request my Andhra Pradesh brothers and sisters not to consider this splitting of the state as a black day, sir, but a great day for the development of both the states, sir. Let's both get funds, sir. Let them also support us in getting funds, sir, which were not given in this budget, sir. Let the government understand that this budget needs to be given for our development also, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. That's Thank you. Next speaker, Madam Srimati D. Purandeshwari Ji. Sir, thank you, Honorable Chair. తెలుగుదేలయన్న దేశంబు తెలుగు తెలుగు వల్లబుండ తెలుగు కండ ఎల్లండ్రుపుల నెరుగ బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. With deep respect and regard to my own mother language, sir, but since I have members of parliament from the northern parliament constituencies as well, I would seek to progress further in English. Sir, today I rise with great humility and responsibility, sir, not merely as a member of this august house, but also as the proud daughter of the state of Andhra Pradesh, echoing the voices of 5 crore people, including the farmers and women of my state. Sir, what I place before this house today is simply not about a city or a town, but it is about sacrifice, about constitutional fairness, and about the moral duty of the Indian state. Sir, when AP was bifurcated, or Andhra Pradesh was bifurcated in 2014, sir, leaving Hyderabad, the joint capital of the newly formed state of Telangana as well as the residual state of Andhra Pradesh needed a new administrative center. Amaravati, sir, keeping in mind its spiritual, its historical, as well as its religious significance in mind, was actually identified to be the capital of our state. Sir, Telangana began its journey with Hyderabad as the capital, sir, which was ready, functional, and globally recognized, but Andhra Pradesh did not have a capital, neither did it have a secretariat, an assembly, or administrative ecosystem. Sir, on the 8th of February 2014, sir, that should be considered a black day in the annals of Indian parliamentary history, because it was on that day, sir, that the doors were shut, the cameras were shut down, there was no healthy discussion, but yet a state was bifurcated on the floor of the house, sir. The people of Andhra Pradesh, the 5 crore people of Andhra Pradesh, they accepted the loss peacefully and constitutionally, keeping the nation's interest in mind. That quiet dignity, sir, laid the emotional foundation for our capital, Amaravati. There were 3 states, sir. I would like to remind the House that in the year 2000, when one of the greatest statesmen of our country, Shri Atal Bihari Vajpayee ji, was the Prime Minister of our country,
3 states were formed, sir, Jharkhand, Chhattisgarh and Uttarakhand. And all of them, sir, they did get as their hereditary a capital, or for that matter, an area was identified to be the capital of the state. But Andhra was subjected to deep humiliation, and this was probably the first state in the entire history, sir, where a state was created with a residual state was left, sir, with no capital at all. Sir, there was absolutely no coercion, and just one call by the center, sir, it had seen 29,000 farmers come forward to contribute, or rather give up 34,000 hectares of 34,000 acres of fertile land, sir, for construction of capital Amaravati. Therefore, Amaravati, sir, is not a mere transaction, but it is a social covenant. And today, probably that is why Amaravati will be remembered in history, sir, as as India's first people capital, built not by coercion, but built by belief, sir. Sir, when the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji was in Andhra Pradesh and he laid the foundation stone for Amaravati in 2015, that was a moment of reassurance to a wounded state. Sir, it was an assurance from the nation directly to the state of Andhra Pradesh. In 1953, sir, the state of Andhra Pradesh was formed based on linguistic identity. Fighting discrimination against the Teluguites in the then Madras presidency, there was a demand for a creation of a special linguistic-based state, sir. And it was late Shri Potti Shri Ramal Garu's sacrifice, sir, which probably led to his death and had also led to the formation of the state. Sir, it should be remembered here today that sacrifice, it had laid the moral and emotional foundation of the state of Andhra Pradesh. However, sir, the bifurcation that had happened on 18th of February 2014, the bifurcation was not against any kind of injustice to the other part of the state, but was driven by sheer and pure political gains by the then Congress-led UPA government, sir. Unlike the earlier movement rooted in sacrifice and political aspiration, the bifurcation, sir, was carried out in a manner that raises serious constitutional, moral, as well as ethical concerns. Sir, between the years 2019 to 2024, Andhra Pradesh had seen a period of deep uncertainty regarding the capital, sir, which was the result of the absolute thoughtless and mindless decision of multi-capitals taken by the then YSRCP government. Sir, despite the then LOP in the state of Andhra Pradesh, on the floor of the assembly, accepting to the establishment of Amaravati as the capital, and despite him reiterating that if not 34,000 acres, 50,000 acres should be taken to create a futuristic, wonderful, beautiful capital for the state of Andhra Pradesh, it was he who changed his words, sir, and brought onto the scene the multi-capitals with the stated objectives of decentralized development. So my question here would be, would simply the establishment of a capital bring in the much needed development to a state? So we know fairly well that for the development of a state, we need to instill confidence in investors, we need to welcome investments, and we also need to ensure that the required logistical and infrastructural needs are actually put in place. However, sir, what we saw in the previous 5 years rule of YSRCP was simply a depletion of all of this, and the entire machinery of YSRCP was deemed or steeped in land and in sand as well as liquor mafia, sir. Sir, most painfully, those who Yes, had sacrificed the land were Please. left with, sir, just another 5-6 minutes, sir. No, please. Sir, the farmers, sir, they agitated for over 1,600 days, sir. It included both men and women, and the humiliation that they were subjugated to has been mentioned by my colleagues, sir. Cases were filed against them under the SC/ST Atrocity Act. Women were actually, pregnant women were pulled out, they were kicked in the stomach, sir. And the annadatas or the farmers, sir, they were handcuffed, and there were many, all of them have been outlined by them, sir.
But here, sir, as a woman member of this house, I say with great restraint and responsibility that when peaceful women protesters are met with force, democracy must pause and must introspect. Sir, there is no specific mention of a capital in the constitution, sir, but under Article 239 AA, dealing with Delhi, sir, there was a mention. But however, sir, the reorganization bill speaks through Section 5 and Section 6 of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 that was passed by this House. It speaks about the capital, sir. And therefore, sir, if there has to be any change in the capital, it will and must have to come back to the Parliament for its, just 2 minutes, sir. It must come back to the House for its ratification. So furthermore, the central government, sir, despite it not being part of it, the central government had provided its entire support to the capital, sir. It could be the 1,500 crores that it gave for the development of infrastructure in the CRDA. It could be the 20,000 crores for the outer ring road, the 29,000 crores for connecting Rayalaseema Anantapuram with the Amaravati, sir. Polavaram being given the national project status, where the 7 mandals which were residually left behind in Telangana were again brought back to Andhra Pradesh. Otherwise, Polavaram dream would not have been realized. It could also be the support, sir. I was listening to Manikam Thakurji, and he was mentioning that there's no support being given to the capital Amaravati. So may I remind my honorable colleagues, sir, that through HUDCO, 11,400 crores have been given, and again, along with the World Bank, the center has also given 15,000 crores for the capital, sir. Special category status was never made part of the bill, even by the UPA government at that point of a time. But the present government, sir, the NDA government at the center, has been giving its full support, sir. Sir, in conclusion, since paucity of time, you've been reminding me that my time is over. Sir, Andhra Pradesh, sir, today is, why we are here to seek statutory recognition for Amaravati, sir, is not political but on moral and constitutional grounds. Sir, statutory protection for Amaravati is really essential because no state would have to lose its capital for the second time. No farmer, being whether a man or woman, should fear no policy reversal. Investors need certainty and not shifting of capitals, and a reorganized state, sir, it deserves stability and experiment. No, sir, please. in conclusion, sir, I would like to only say that Andhra Pradesh today is seeking no privilege, sir. It seeks certainty. It is not asking for politics, sir, but it is asking for justice. It is not asking for sympathy, sir, but it is asking for the faith of the farmers, be it men or women, to be honored in law and policy. Let Amaravati, sir, be remembered today not as a dispute but a lesson that when citizens trust the state will protect that trust. I urge this august House, sir, to stand with the state of Andhra Pradesh so that Amaravati stands forever a stable, lawful and proud capital, and as a testament of how India honors sacrifice. Sir, I was listening to Samajwadi Party, Dharmendra ji, and he stood up and said that we would support Amaravati, sir. Maybe he said that he spoke about the farmers, which is accepted in true spirit. However, sir, it is quite unfortunate to see the YSRCP Parliament members walk out, sir, and not wanting to vote for Amaravati. Thank you, sir. Thank you very much, Sri Arvind Savanji. माननीय चेयरमैन सर, आज आंध्र प्रदेश के Just 2-3 minutes. अमरावती को राजधानी का Just 2-3 minutes. बिग पार्डन, Just 2-3 minutes. Because we have to conclude the discussion by 2 o'clock. आई एम नॉट एबल टू हियर यू सर. No, we have to conclude the debate by 2. यस ओके, आई विल बी 5 minutes. आई वोंट मच मोर दैट. आज आंध्र प्रदेश के अमरावती की राजधानी का स्टेटस देने का बिल लाया, उसका मैं सहे दिल से स्वागत करता हूं. लेकिन देर आए दुरुस्त आए. हमारी बहन पुरंदेश्वरी जी डॉक्टर बात कर रही थी, तो पुरंदेश्वरी जी मुझे उसकी याद आई. आपके चुनाव क्षेत्र से डॉक्टर बाबू आए थे चुनकर तेलुगु देशम पार्टी से, और ये मेरे मित्र राम बाबू आज हमारे मंत्री है. हम सभी एक थे उस वक्त, सत्ता पक्ष के साथ में थे, और वो दर्द मैंने और चेयर ने दोनों भी देखा है.
5 बरस तक खेलते रहे आपके साथ में। ये हर वक्त खड़े रह के बोलते थे कि स्पेशल स्टेटस दे दो। वो स्पेशल स्टेटस देने के लिए आपकी पार्टी ने इतना समय लिया है, वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि वो तो बेचारे बहुत तड़पते रहे। वो तड़पते रहे 5 बरस तक। I have not yielded, sir. I have not yielded. The fact I am telling you the fact. I am telling you the fact. The fact is that Chandrababu Naidu was very eager. I mean, मुझे याद है उस बात की। आज हम लोग उनको भी भूल रहे TRS को, जिन्होंने इसका विभाजन किया। वो जो कानून बनाया गया उस वक्त हम लोग नहीं थे, लेकिन विभाजन के बाद में जब हम चुनकर आए तो तेलुगु देशम पार्टी और शिवसेना पार्टी वर टुगेदर विद द बीजेपी पार्टी. We were in alliance, and they were demanding for 5 years. I was listening the same demand कि भैया हमें स्पेशल स्टेटस दे दो, हमें स्पेशल स्टेटस दे दो। आखिर तक नहीं हुआ। आज पता नहीं, चलो देर आए दुरुस्त आए, आपके सरकार के मन में आया है, अच्छी बात है, उसका स्वागत करता हूं। स्वागत करते समय मैंने कुछ स्पीचेस भी सुने हैं। हमने देखा है कि जब राज्य बनता है तो राजधानी होनी चाहिए। वो तो 3 राजधानियां बनी थी। अच्छा हुआ आपने अमरावती को सिलेक्ट कर दिया। मैं जानता हूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू जी के लिए ड्रीम है, सपना है, और वो सपना साकार करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ऐसी बने राजधानी कि पूरा विश्व उससे देखे कि अमरावती हमारे राज्य में भी एक जिला है महाराष्ट्र में, उसका नाम भी अमरावती है। तो मैं चाहता हूँ अमरावती खूबसूरत बने, लेकिन खूबसूरत बनते समय यह न सोचे। सर मैं बहुत एक मन से रिक्वेस्ट करता हूँ, आजकल